9 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था। जॉइंट एडमिशन प्रोसेस फॉर 4 लीडिंग आईएम्स एंड दीज आईएम्स आर काशीपुर, रायपुर, रांची एंड त्रिची। सो इन सारे 8 आईएम्स ने एक सिंगल जीडीपीआई वैट कंडक्ट किया। जो रेलेवेंस कैप का था वही जैप का है। क्राइटेरिया ऑफ जैप का जो एडमिशन होगा उसका क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हो। हेलो एवरीवन, नाउ आजकल बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है जॉइंट एडमिशन प्रोसेस जैप 2026 के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ फज दैट इज क्रिएटेड ओवर द इंटरनेट एंड आप बहुत सारे रील्स देख रहे होगे, लोग परेशान हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब ये जेएपी जैप 2026 है क्या? सो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही न्यूज आई है एंड वन ऑफ द IIMs हैज रिलीज दिस। देयर इज अ प्रोफेसर हु हैज मेंशन्ड अबाउट जैप एंड पीपल आर थिंकिंग कि यार कोई ये नया प्रोसेस है, कोई नया एडमिशन टेस्ट है विच इज कंडक्टेड बाय 4 IIMs। क्या 4 IIMs अलग हो रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सिनेरियो है एंड इंपॉर्टेंटली ये कुछ न्यू चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर भी सिमिलर चीज हुई थी, इस बार भी सिमिलर चीज हो रही है, राइट? सो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जैप और आपको इसके लिए क्या स्टेप उठाना है, कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं, एंड थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे एंड हम जैप को कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर अगर आपने सुना होगा कैप, CAP, कैप और जैप में क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या है, अगर डिफरेंस नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर डिफरेंस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? सो फ्रेंड्स, जॉइंट एडमिशन प्रोसेस, दिस इज नथिंग न्यू. This is basically a collaboration of 4 IIMs. I'll be telling you their names. So this is a collaboration of 4 IIMs. अब collaboration किस चीज के लिए है? For the admission process. So what happens is every year we write CAT. So this year we'll be writing CAT 2025, right? Now after CAT exam is over, we'll be getting the result of CAT, and on the basis of the result of CAT, on the basis of percentiles that we will get, different IIMs will be calling us for their second stage of admission process, that is called GDPI VAT, राइट? जीडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, वैट होगा, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, जनरली पीआई एंड वैट होता है। आई कॉल इट सेकेंड स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस, सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट? तो फर्स्ट स्टेज क्या है? कैट 2025 का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे IIM अहमदाबाद आपको कॉल करेगा, IIM बेंगलोर, IIM कैलकाटा, लखनऊ, ऐसे ही टोटल हमारे पास 21 IIMs हैं एंड ईच एंड एवरी IIM will be conducting its interview process, right? अब ऐसा नहीं होता, हर IIM अपना अलग इंटरव्यू प्रोसेस नहीं करता कंडक्ट। सो लास्ट ईयर क्या हुआ था? सो लेट्स गो टू द सिनेरियो ऑफ लास्ट ईयर, राइट? सो आई टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी ना कैप 2025 की, मैं उस पे लेके जाता हूं। सो लास्ट ईयर क्या हुआ था? देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 8 IIMs। इन IIMs का नाम मैं बता देता हूं आपको। सो इन IIMs थे IIM बोध गया, IIM जम्मू, IIM काशीपुर, IIM नागपुर, रांची, सिरमौर, त्रिची एंड उदयपुर। सो व्हाट दीज 8 IIMs डिड वाज दे डिसाइडेड कि हम अलग अलग GDPI प्रोसेस कंडक्ट नहीं करेंगे। सो विल बी कंडक्टिंग अ कॉमन प्रोसेस थ्रू विच विल बी ऑफरिंग द एडमिशंस। अब इससे स्टूडेंट के लिए क्या फायदा हुआ? So let's say if I am a student who is living in tier 2 city, tier 3 city, हर एक IIM के इंटरव्यू के लिए हमें दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। So IIMs के इंटरव्यूज कहां कहां पे होते हैं? मेट्रोपॉलिटन्स में होते हैं, या फिर IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू अहमदाबाद में होगा। So we'll have to go to Ahmedabad. Then for the interview of Bangalore, we were going to Bangalore. फॉर द इंटरव्यू ऑफ बोध गया, हमें बोध गया जाना पड़ेगा, हमें बोध गया या फिर दिल्ली किसी भी मेट्रोपॉलिटन में आना पड़ेगा एंड हमें इन 8 IIMs के अलग अलग इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। सो टू मेक द मैटर्स सिंपल, राइट, लेस cumbersome for a student, these 8 IIMs decided to conduct a common admission process in which they will be conducting a single round, a single process which is like conducted by, which is basically taken by all these 8 IIMs, right? So इन सारे 8 IIMs ने एक सिंगल
GDPI VAT conduct किया, and with the results of that they have provided the admissions, they have offered the admissions in these 8 IIMs. तो 8 प्रोसेस अलग अलग देने की जगह मुझे एज अ स्टूडेंट सिर्फ एक ही प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा, एंड दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड कॉमन एडमिशन प्रोसेस 2025, राइट? अब 2025 क्यों बोला गया? कैट 2024 के रिजल्ट्स के बेसिस पे ये प्रोसेस 2025 में कंडक्ट किया गया, बिकॉज एमबीए उन स्टूडेंट्स की 2025 में शुरू होगी, राइट? नाउ सिमिलरली द स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग कैट एग्जामिनेशन in 2025, for these students we have JAP, joint admission process. So common admission process था, अब सेम नाम तो नहीं दे सकते, so यहां पे नाम दे दिया गया joint admission process, and जो रेलेवेंस कैप का था वही जैप का है. So looking at the official website of IIM Raipur, which is in front of you, IIM Raipur की वेबसाइट आपके सामने है, right, which is one of the 4 participants in JAP. So if I'll scroll, so they have the complete, like they have notification about JAP. So let's open this notification. अब ये notification क्या कहता है? So notification says joint admission process for 4 leading IIMs, and these IIMs are काशीपुर, रायपुर, रांची and त्रिची, right? So जिस तरीके से कैप प्रोसेस में there were 8 IIMs included, in JAP process there are 4 IIMs who are conducting a joint admission process together. That means अब आपको इन 4 IIMs के लिए अलग-अलग PI नहीं देना पड़ेगा. There will be a joint, there will be a common admission process for these 4 IIMs, right? And the name for this admission process is given as Joint Admission Process 2026. Now everything is written at the bottom in this notification. So if I'll read this notification out, notification Raipur 9 September 2025 को release हुआ था. It says the Indian Institute of IIM Kashipur, Raipur, Ranchi and Trichy have announced the launch of Joint Admission Process 2026 for MBA admissions. IIM Raipur will be the coordinator of JAP 2026. That's why it is on the official website of IIM Raipur. Handling the admission process for all 4 participating IIMs, JAP 2026 is a joint initiative showing the commitment to excellence, collaborative resource management, and delivering a transparent, aspirant-focused admissions experience that meets IIM standards, right? So these are other details about this process. So JAP streamlines the admission process for applicants, allowing them to apply to 4 IIMs through a single window. So आपको अब चारों IIMs के लिए अलग-अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. Now that does not mean कि अब आपको इन सबके फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा. अभी आपको कुछ नहीं करना. कैट से पहले आपको कुछ नहीं करना. So you have already applied for CAT. In CAT, you have already selected all the IIMs, right? Fine. अब आपको CAT से पहले कोई फॉर्म फिल नहीं करना as far as JAP 2026 is concerned. JAP 2026 will come into play automatically. आपको कोई लोड नहीं लेना है. So CAT के रिजल्ट के बाद हम क्या करते हैं जनरली, हमारे पास IIM अहमदाबाद का कॉल आता है अगर, तो IIM अहमदाबाद का एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, राइट? Similarly, if you will be satisfying the criteria of JAP का जो एडमिशन होगा उसका क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको JAP के लिए इन 4 IIMs के लिए एक कॉमन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. अगेन इन माय व्यू आपको उस चीज के लिए भी कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो JAP 2026 streamlines the admission process for aspirants, allowing them to apply for 4 IIMs through a single window. Post the declaration of CAT results, clearly लिखा हुआ है, post the declaration of CAT results, applicants will be eligible to get admission in any of the 4 participating IIMs through joint admission process. So this will be post CAT results. जो भी qualified candidates होंगे, they will undergo joint admission process and they will be offered admission in one of the 4 IIMs which are participating in this process, right?
सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, कुछ नया नहीं है, हर साल होता आया है ये, राइट। महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम के बाद भी ऐसा एक प्रोसेस कंडक्ट होता है जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं। आईएम्स के लिए लास्ट ईयर हुआ था कैप, उससे पिछले साल हुआ था, राइट। एंड दिस ईयर दिस इज जेएपी, जस्ट there is a change in number of colleges and the IIMs which are participating in this, right? So stay calm, stay focused on your CAT 2025. ऐसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, right? And we at MBA Wallah will provide you the complete information about each and everything, each and every process. In case you will have to do something, in case you don't have to do something. In this particular case, आपको कुछ भी नहीं करना. All right, fine. So all the very best for your preparation. Keep going ahead. Do not stop because of such distractions. All the very best.